Good evening, everyone. Today we have with us this year topper All India rank 40 rank in civil services. And first of all, to let us all welcome him. Many congratulations for his big best wishes for today. He will be sharing his ideas, his initial reasons, failures. Exam in this coveted exam really difficult. Especially when I assured him that he will he go to him. Thank you so much, sir. Well, and everyone, and it's like we have a crowd. Really an amazing feeling, finally being on the other side of the game. Like, हम लोग भी that side, and very good thing to do. यार कब talk? Finally, Eureka moment. So it is our Eureka moment. I'll give a brief introduction about name issue. I have secured an All India rank 40, and this was my 4th attempt. But my very first time making यही था कि सर ने सही सर से मिला सर आएगा नहीं आएगा आ जाएगा कैसे आएगा सर सेड दैट नहीं ऐसे नहीं आएगा have that potential you'll have to work for it right I have potential सर ने बताया ये I met him a couple of times well thank you so very much sir काफी ज़्यादा helpful thank you so much thank you so much maybe what I feel that key 93 and written me it was 808 it is but what I feel that my written score got me into the list get into the नहीं हुआ allotment couple of days wo I have a lot of people to thank then such as up part of the list thank you so very much sir and about a little about my journey my optional ESIR has not always been बचपन में स्टार्ट करते मुझे भी ऐसा था कि अच्छा माइक को लगी ताजपोशी ओके अब ठीक है सर कूल 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 तो वही मैं बोल रहा था वाओ इट्स वेरी अनकंफर्टेबल बट ओके तो वही मैं बोल रहा था कि माई ऑप्शनल हैजंट ऑलवेज बीन PSIR स्टार्टिंग में जोश था कि चलो यार अब तो केमिस्ट्री लेके सॉल्व किया जाएगा निकाला जाएगा रैंक बिकॉज देयर वर सम रीजंस आई विल कम टू इट इन द जर्नी वाले पार्ट में बट थिंग्स डिडंट गो वेल फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड के बाद लगा कि नहीं लेट्स नॉट बी इन अ लवलेस मैरिज लेट्स चेंज आवर पार्टनर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक हैप्पी लाइफ चाहिए अब चाहे आप केमिस्ट्री के साथ करो या PSIR के साथ करो So I jumped over to PSIR, which was a natural choice. Again, I'll be explaining why and why not. Things worked out for me then. And if you were to ask me, even minutes before seeing my name in the list, was I sure I would be getting a two digit rank or anything? No chance. कोई chance नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ confidently कि मेरे ये rank आएगी वो rank है because of the unpredictable nature of this examination. You write something, you do your best. But there are things that you cannot control. So the better thing, the wise thing would be to not think about it, to not lose sleep over it. Right? I was sure कि कहीं list में नाम आ सकता है because I had this faith. 43 is like बोलते हैं ना dream come true, fairyland उस type का है. तो this is something an advice I would give to all of you as well as the people who are watching me over live. This is only as much as you can control and not only about the exam, about life as well. उस पे जो control कर सकते हो, make sure you have it in your grip.
Make sure whatever you do about it, it is in your control, and ऐसा ना हो जाए, it is controlling you, you have to control it. If you're making a schedule, your schedule is not the one directing you, you are directing your schedule. आप schedule के पहले complete करते हो चीज़ों को, ये आपका merit है. अपना शेड्यूल तो यही चाहेगा कि मैं दिन में एक चैप्टर पढ़ूंगी पॉलिटी का, बस खत्म, मेरी यूपीएससी तैयारी चल रही है, यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, लवासना की फोटो डाल दूंगी इंस्टाग्राम में. नहीं, दिस इज योर शेड्यूल कंट्रोलिंग यू, दिस इज नॉट यू कंट्रोलिंग योर शेड्यूल. यू कंट्रोलिंग योर शेड्यूल इज लाइक यू मेक टारगेट्स लॉन्ग टर्म, उसको आप लाओ मंथली, उस मंथली टारगेट से यू ब्रिंग इट टू वीकली, वीकली से ब्रिंग इट टू डेली. सम टॉपर्स टॉक अबाउट आवरली टारगेट्स एज वेल. 9 से 12 पॉलिटी, 12 से 12:30 लंच, 12:30 से 12:45 रेस्ट. This is something I have never done in my life and I wouldn't recommend. The lowest that I have brought down to is daily targets. कि daily आज इतना इतना करना है. Once you're done with the targets, fill करो. So this has been in approximate things about me and everything. And if you look at my marks, like if you like my mark sheet is already in the domain, I'll give you a gist of what my marks were. I scored around 115 in my essays, and my GS scores this time around was around 435. Last time it was 360, so I made a plus 75 jump in my GSK scores. In my optional I scored 255. Last time it was 200, so एक number कम. Plus 56 jump in optional के scores. And this jump is the thing that pushes you to the list. For many of you, it will be the first time में ही आप directly jump मारते हो. For some of you, it is the incremental things. And one more important thing. I've been telling you कि मेरे 75 से jump हुआ है in my GS. Do you really think एक पेपर में 75 का jump हुआ होगा? No. That jump isn't in one paper. It spans over 4 papers, almost 75 to 80 questions. तो जो 75 mark का jump, जो mega jump आपको दिखता है, it's actually per question 1 mark or half mark का jump. And this is what you should be targeting. If you have written mains, if you have not written mains, okay. Target incremental growth. छोटे छोटे growths. आप ब्यूरोक्रेसी में जाओगे, पहला दिन आप सिंघम बन के नहीं जाओगे कि दरवाजे तोड़ के करते हैं कि अब मैं सुधार कर दूंगा. नहीं, इट डजंट वर्क. चेंज इज ग्रेजुअल. हम लोग अपने सीनियर्स या सर से ही बात करते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में. सर हैज बीन अ सर्विंग ब्यूरोक्रेट एज वेल. एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है, इट्स अबाउट इंक्रीमेंटल चेंजेस. छोटे छोटे चेंजेस करके इट विल एड अप टू अ बिग थिंग. सो इसका पॉइंट 2 चीज है. नंबर 1, बी पेशेंट. छोटे छोटे चीजों पे काम करना है. एंड एज यू गाइज आर पेशेंट, एट द वेरी सेम टाइम you have to ensure or understand that you do not miss anything, even if it is slight thing. बहुत लोग बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री मत पढ़ो, क्वेश्चन नहीं आता. क्वेश्चन आ गया तो क्यों रिस्क ले रहे हो? इसलिए like there is this logic कि this is more important, this is less important. Okay, it might be. You can time your schedule according to that, but never ignore anything. If there is a question on world history and you aren't prepared, if I have no shame in admitting, I'll give you a personal example. Art and culture. It was something that I had very little idea about because मैं पढ़ने मुझे बहुत boring लगता था. But 4 attempt में जाते जाते you have read the basic book at least once. You know that something, if something comes your way, you know how to write, what to write. And this is important. Do not skip anything. So first 20-25 minutes I'll talk about what are the things that click for me, what are the things that I did. उसके बाद I'll take your questions, okay? So first of all, what are the things that clicked for me? क्या क्या चीज मेरे लिए क्लिक की हैं? First, practice. Practicing whatever you have studied. Practice is of two stages. One, revision वाला stage. You have to revise whatever comes your way. ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और फिर भूल गए, बस प्री वाले दिन चले जाएंगे, अब तो आता ही है, पढ़ा हुआ ही है, सब पढ़ लिया हमने. नहीं नहीं नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे. ट्रस्ट मी. बस अगर आपको कुछ भी चीजें याद होगी, जैसे आपको याद है बचपन के जो पोएम्स होते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इतना याद क्यों है? आपसे घर वालों ने आपसे 500 बार उसको गवाया होगा. 500 times bare minimum. I'm not telling you to revise Lakshmikant 500 times or your notes 500 times, but revise it periodically so that in case if the intensity of it being inside your head अगर वो कम हो रहा है, तो revision is like a fresh layer of paint. ठीक है ना, शाइन बनी रहेगी. So practice of 2 types. One is revision.
सेकंड, प्रैक्टिसिंग द पेपर्स. प्री के लिए मॉक्स बहुत सारे दो. मेंस के लिए इफ बेटर फुल लेंथ, इफ नॉट डेली आंसर राइटिंग कुछ ना कुछ कर लो. अगेन दिस इज अ डिस्क्लेमर कि वंस यू डन विद योर कंटेंट पार्ट, उसके बाद आप डेली आंसर राइटिंग पे जाओ या आंसर राइटिंग पे जाओ. बिकॉज लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन ऑन आसियान. You know about ASEAN but you do not know about India's relation with ASEAN. तो आप फंस जाओगे. तो इसलिए बेटर होगा you complete something and then you jump over to the answer writing part. But ignore मत करिए. आंसर राइटिंग करना बहुत मुश्किल का काम होता है. लाइक इवन आई एम अ लेजी पर्सन. मैंने भी 2-3 अटेम्प्ट सोचा अरे यार आंसर तो लिख ही लेंगे, लिखना आता ही है. डोंट रिलाई ऑन दैट, डोंट डू दैट अनलेस यू आर वेरी कंफर्टेबल विद समथिंग. बट एज पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ या फिर आप लोगों ने बहुत अटेम्प्ट्स नहीं दिए, वेटरन्स नहीं हुए हो, I would still suggest number 1 revision, number 2 practice. Pre में give lot of mocks, mains में full length test, sectional test वो भी नहीं मन कर रहा है, time your answers. 3-4 आंसर ही लिखो. क्या करो, 2 10 markers in 15 minutes और 1 10 marker plus 1 15 marker in 17 minutes. Do something like this. यही करना ही आपको, right? Point ये being कि whatever you are reading, revising, try to apply it as well. First thing this clicked for me. Second, what clicked for me? Revision बोल दिया. Second, following toppers के आंसर कॉपीज. आप लोग में से किसी ने आज तक टॉपर्स के आंसर कॉपीज देखे हैं? कितने देखे हैं, कब देखे हैं, बताइए. टीना डबी मैम, ओके. आपने सर? ओके फाइन. मतलब यही 1 2 3 4 5 बार. if you are if like you guys are must be targeting 2023 मेंस वाला ना, 2023 का एग्जाम, राइट? at least until prelims make sure that once a month आप एक वीक आंसर राइटिंग को दो, मतलब टॉपर्स के आंसर कॉपीज को दो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जुलाई आने वाला है. what you can do is for every next 7 8 9 months, the first week of the month there are 7 papers you have to write and there are 7 days in a week. Let's say Monday, first Monday of July, या first Monday of any month, GS1, first Tuesday GS2, first Wednesday GS3, ऐसे करके 7 papers करना है. You have to do this. Okay, I might agree that some of you might not have a lot of idea about it. ये तुमने कभी पढ़ा नहीं. Don't worry. अगर आप लोग को if you do not get the content, get the style. Try and understand basic English, basic हिंदी सबको आती ही होगी. Try and understand वो कैसे अप्रोच किया है, क्या रिप्रेजेंटेशन लगाया, what something innovative or extra has he done. This is what is important. Make it a habit. टॉपर्स की कॉपीज पढ़ने का. This is something that I did over my third attempt से fourth attempt में. This helped me a lot. Third important thing, working on your optional. तो मैं optional का भी बता देता हूँ. Like, have you guys chosen your optional? Is there anyone who has not chosen his optional? Fine. So मैं choose नहीं किया. Fine. आप लोग कुछ लोगों ने choose नहीं किया, right? So first of all, there are a couple of pointers on how to choose your optional. Number 1, do not be sentimental. Personal example, I am. मैं जस्ट ग्रेजुएशन से ग्रेजुएट किया था, उस अटेम्प्ट में मैंने केमिस्ट्री से दिया था बिकॉज आई वाज लाइक कि चलो केमिस्ट्री से दे भी देंगे एंड पैरेलली वो जेई नीट के कोचिंग होते हैं ना, जिसमें आकाश और क्या क्या दुनिया भर के कोचिंग होते हैं, उसमें जाके बच्चों को पढ़ा भी देंगे. तो आई वाज लाइक कि चलो इफ आई कैन टीच, बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो यूपीएससी भी पढ़ा लेंगे यार. एंड दिस इज वेयर आई फॉल्टर्ड वेरी बैड. क्यों? एक सेंटिमेंटल डिसीजन था, हिटिंग 2 birds with 1 stone, बट द स्टोन फेल फ्लैट ऑन माई फेस. मुंह हाथ टूट गया. फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट किया, अगेन द सेम रिजल्ट. देन आई हैड रियलाइज दैट नहीं, भावनाओं में बह के मैंने गलती कर दी है. आई हैव मेड अ मिस्टेक टेकिंग अ सेंटिमेंटल डिसीजन. even as an administrator in your future, base your decision on common sense and appropriate or adequate research. Now, what are the parameters of research? First parameter is your interest. I had an interest in chemistry. I chose that. इसके बाद भी कुछ parameters है. I probably forgot about them. ये interest से तो कर ही लेंगे, क्या ही है. First parameter is your interest. Let's say, ma'am, you are not interested in medical sciences. Example. I would actually suggest you to सीधा avoid करने का. If your first parameter is not being met, या फिर let's say sir you are not interested in mathematics. कोई sense ही नहीं है.
इट्स लाइक अ मैरिज, ऑप्शनल के साथ इट्स लाइक अ मैरिज, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. अब जिसका जिसका चेहरा ही देखने का मन नहीं करेगा, वुड यू लाइक टू मैरी समवन लाइक दैट? नहीं ना. So it's about choosing a subject which interests you. Second, availability of guidance. Any form, whichever form you suit. कहीं ना कहीं जैसे केमिस्ट्री में मुझे पता ही नहीं था कोई क्या है क्या नहीं है, किसी एक टॉपर के 10-15 साल पहले नोट्स मिल गए थे, वही देख के गया, कुछ नहीं हो रहा था. Third, availability of resources. If there's some guidance available, fine enough, but it must be supplemented with resources as well. ठीक है ना? Like let's say कि केमिस्ट्री इज अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट ना, क्लास 9-10 के बच्चे पढ़ते हैं, कोई ना कोई तो बता ही देगा कि केमिस्ट्री में ये देख लो, ऑर्गेनिक की ये बुक पढ़ लो. बट फॉर समवन हु डज नॉट हैव अ बैकग्राउंड इन केमिस्ट्री, रीडिंग अ बुक ऑफ ऑर्गेनिक इटसेल्फ इज अ बिग टास्क. तो प्रॉपर रिसोर्सेज, टॉपर्स के रिसोर्सेज, कोचिंग रिसोर्सेज, वीडियो रिसोर्सेज, वट वो मिल गया, इट विल बी मेक योर लाइफ वेरी इजी. लास्ट एंड अ मेजर फैक्टर, overlap with your GS, and it'll often make your life very easy. क्यों? I'm not discouraging people who want to take up a science or a technical option. I'm not discouraging you. You're free to take it. लास्ट वन इसलिए मैंने इसको सबसे प्रायोरिटी में नीचे इसलिए रखा है बिकॉज इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी. पॉल साइंस मेड माई लाइफ वेरी इजी बिकॉज पेपर 1 सेक्शन बी पॉल साइंस का इज इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स, पेपर 2 सेक्शन बी इज इंटरनेशनल रिलेशंस. So I knew that even if I cover from those sections, I'll just have to moderate my answers for a GS like question, and this will cover my GS2. And GS2 में मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं, 127 मिला है, which is a decent score. Right, तो this is where pol science helped me. It also helps me with जो thinkers winkers आते हैं ethics में, उसमें help कर देता है. थोड़ा बहुत society के questions हो जाते हैं, how society, caste and all operate, GS1 में इसमें भी help कर देगा. So this is where pol science helped me. Public administration also helps you in sub subject. Sociology will help you in sub subject. Mathematics may directly not help you. ठीक है? So this is also a factor that people go. And one major factor that you should not follow while choosing an optional. मेरे दोस्त बोल रहे हैं ले लेते हैं, वो पड़ोस वाली रिया है, वो उस ऑप्शनल में जाती है. नहीं, पड़ोस वाली रिया के चक्कर में मत भागो. पड़ोस वाली रिया IAS बन जाओगी, आप छठे टर्म में फंसे रहोगे. डू नॉट डू दिस. ठीक है? आई नो पीपल हु डू दैट. अरे यार सब दोस्त जा रहे हैं मेरे सोशियोलॉजी में, मैं भी चल लेता हूँ. उस भाई का शायद मैथ्स वैसे किसी से क्लियर हुआ है. डू नॉट डू दिस. हर्ड मेंटालिटी फॉलो नहीं करना है, सुनो सबका, करो खुद का. ठीक है? यू माइट बी सिटिंग अलोन इन द क्लास, यू माइट मेक न्यू फ्रेंड्स, यू माइट मेक बेटर फ्रेंड्स, बेटर स्टडी मेट्स. राइट? तो दिस इज अबाउट चूजिंग एन ऑप्शनल. अब यही था अबाउट ऑप्शनल्स. गिव एप्रोप्रिएट टाइम टू योर ऑप्शनल, whichever way. Like if you're having a good teacher, go for it. If not, self study कर रहे हो, go for it, but give adequate time to your optional. GS का आंसर यही आपको लिख लो, टैटू बना लो. संजय सिंघानिया था ना गजनी मूवी में, उसके टैटू बना लो. GS का आंसर मस्ट बी रिटन फॉर जनरल पर्सन. ऑप्शनल का आंसर शुड बी रिटन फॉर समवन who's someone like a technical expert in that. इसलिए पेपर 2 मतलब GS2 का IR का आंसर्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम PSIR का IR का आंसर्स. आप इधर से उधर करने गए, UPSC बोलेगा अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना. सिंपल एज दैट. दिस इज फैक्ट. मेनी टॉपर्स हैव लॉस्ट मार्क्स बिकॉज उन्होंने IR में ऐसे ऐसे थिंकर्स के नाम दे दिए, थ्योरीज के नाम दे दिए जो GS वालों के लिए समझ में नहीं आएगा. डू नॉट डू दिस. अगर आपका ओवरलैप कर रहा है, मेक श्योर यू हैव अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू. The study material might help, but the way of presenting your answer differs. Devote good time to your optional, especially for humanities based optional. आप लोग जिन लोग choose कर रहे हो, make a list of keywords, thinkers, quotes very much ready. कई बार you will revise that and you'll be able to attempt answers. Toppers copies मैंने बता दिया है. Lastly, do not leave any question paper जब time आएगा. एनी क्वेश्चन पेपर में जो ब्लैंक बोलते हैं ना स्कूल में कि पन्ने भर के आ जाओ नंबर मिल जाएगा. आई डू नॉट नो हाउ आइडियली UPSC ऑपरेट्स, बट माई एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट 4 मेंस, मुझे लगता है UPSC ऑल्सो ऑपरेट्स लाइक दिस. ये मेरा असेसमेंट है. बिकॉज जब जब मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं, माई स्कोर्स हैव बीन इन 70 to 90. इस बार मैंने क्वेश्चंस नहीं छोड़े. इस बार मैंने ये था कि GS में भले ही मैं कुछ भी करके आऊंगा, ड्राइंग बना के आ जाऊंगा किसी क्वेश्चन में, बट मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा. एंड दिस इज वॉट हैज हेल्प मी अ लॉट. 4 में से 3 सब्जेक्ट्स में आई हैव अबव 110, एक में आई हैव 92. दिस इज व्हाट हैज हेल्प मी. अभी 92 उसमें था जिसमें पिछले बार 70 आए थे मेरे. तो वही है, एक एक नंबर का इंक्रीज है हर क्वेश्चन में. एंड दिस इज व्हाट यू मस्ट बी टारगेटिंग.
समझ रहे हो आप लोग? अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज दिस मॉन्स्टर और द chimera called prelims. आज रिजल्ट भी निकला है, so something for the people who have anyone of you appeared for prelims इस साल? Okay, there might be someone who has appeared for prelims. If you have gone through it, आपको best of luck. Prepare well. Next 3 months will decide a lot. If you haven't made it to prelims, like made it past prelims this time, don't be disheartened. Take some time off, introspect, and then come back stronger. This is the beauty of this exam. I know of friend, उनका 3 consecutive प्री नहीं निकला था, निकला है प्री, निकला है मेंस, अच्छा इंटरव्यू, डबल डिजिट रैंक, आईएएस मिल रहा है उनको. ऐसा भी होता है. डू नॉट falter, डू नॉट पुल योरसेल्फ डाउन. ठीक है, लाइफ गिव्स यू हिकअप्स ऑन द वे, ठीक है ना. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. थिंग्स कैन गो साउथ एट टाइम्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गेटिंग अप. ठीक है, ये एटीट्यूड भी आप लोग ट्राई करो डेवलप करने का. एवरीवन, इफ यू आर प्रेटेंडिंग टू बी, बिकॉज सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप लोग को लग रहा है कि यूपीएससी एक साल में निकलता है तो बहुत एक मिनिस्कल प्रोपोर्शन का निकलता है. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस. मेरा खुद 5 साल ऑलमोस्ट लग गया था. 1 साल का प्रेप एंड देन 4 अटेम्प्ट. आई नो पीपल जिनका साथ में निकला है. आई ऑल्सो नो समवन इसका पहला अटेम्प्ट में निकल गया है. बट मोस्ट ऑफ द पीपल आप देखोगे वो उनका लंबा प्रोटेक्टेड साइकिल है. So be mentally prepared. Things might go wrong somewhere or the other. It's important that you learn from it. Learning from it is very important. Things might not be in your favor always, but एक जज्बा रखो. आप डीएम बनोगे, हमेशा स्मूथ सेलिंग नहीं होगा, बट उसी यही जज्बा रखना है कि if things goes out, I'll bounce back. ठीक है ना? तो this was about pre. हाँ, how again a very famous question. I'm answering a couple of questions for you ताकि आप लोग से कम questions आए. Just kidding. I'll have a lot of time today. आराम से questions पूछना आप लोग. How to prepare for pre and mains. सबसे important चीज़ है integrate. When you are reading a book, when you're reading your notes, आप लोग के टीचर्स ने कभी आपको नोट्स ये नहीं बोल के बनाए होंगे कि ये प्री के लिए नोट्स बनवा रही हूँ ये मेंस के लिए. इट्स इंटीग्रेटेड स्टडी. सबका साथ सबका विकास, पता है ना? इट्स इंटीग्रेटेड. यू हैव टू इंटीग्रेट योर प्री एंड योर मेंस के स्टडी टुगेदर. वही है फर्क. क्या है? प्री में यू विल हैव 4 ऑप्शन जिसमें आंसर इज इन वन ऑफ देम. आई हैव टू आइडेंटिफाई दैट. मेंस में यू हैव टू एलैबोरेट इट. एक बहुत अच्छे लेवल तक द टू ऑफ देम आर सेम. उसको पढ़ना भी वैसा ही है. ऐसा नहीं होता कि गवर्नर आपका प्री में अलग हो जाता है और मेंस में एक अलग ही गवर्नर आता है. ऐसा नहीं होता है. दिस इज नॉट द केस. सो इंटीग्रेट एंड स्टडी. रिवाइज as much as possible. Again, practice a lot. Most importantly, cover as much as you can. करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक हो गया, देयर आर सम बोरिंग सब्जेक्ट्स, सम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स. क्यों छोड़ना है? इस साल का पेपर देख लो प्रीलिम्स का. इफ यू हैव टाइम, अगर देखा होगा तो देख लो. आर्ट एंड कल्चर से अच्छे क्वेश्चन आए हैं. वो तो लकी हूँ कि मेरा निकल गया, वरना मैं ही फंस गया होता. पॉइंट बीइंग, डू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. द यू इन यूपीएससी स्टैंड्स फॉर अनप्रेडिक्टेबल. इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर यूनियन, बट लिटरली अगर बोला जाए तो अनप्रेडिक्टेबल. पेपर देख लो इस बार का. अब कोई गैस वैस लगाने का तरीका करता है, यूपीएससी बोला अच्छा बेटा आ जाओ आप लोग भी गैस लगा लो. यूपीएससी बोला यार ये चेयर है, बैठिए, गैस लगाइए, आप लोग, पूरा मौका दिया जाएगा आपको. मतलब ये है कि यूपीएससी इज इवॉल्विंग, इवॉल्व विद इट. हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि गैसेस नहीं लगाए गए हैं. इस बार भी गैसेस लगे हैं, अच्छे से लगे हैं. पॉइंट ये है कि यूपीएससी इज ट्राइंग टू इवॉल्व. इट्स अनप्रेडिक्टेबल. डू नॉट लीव एनीथिंग जिससे आपको बाद में लगे अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, ये पढ़ लेना चाहिए था. ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए. फॉर योर ऑप्शनल, फॉर योर एसे, फॉर योर एथिक्स, व्हाटएवर पेपर. ठीक है. Last and the most important thing before I take your questions, have faith on yourself. आपको अपने, आप लोग में से कितने लोग को लगता है कि आप लोग 1, 2, 3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में, जितने भी अटेम्प्ट में आईएएस या आईपीएस कुछ बन पाओगे? कितने को लगता है? कोई ऐसा है जिसको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है? लगता है. एवरी डे व्हेन यू वेक अप, आस्क योरसेल्फ, यही चीज करनी है आपको. आस्क योरसेल्फ कि मैं सही चीज कर रही हूँ ना, मैं सही चीज कर रहा हूँ ना, एम आई गोइंग ऑन द राइट ट्रैक? बिकॉज एंड कीप टेलिंग योरसेल्फ यस, मैं एक दिन बनूंगा. इट माइट टेक 1 year फॉर मी, इट माइट टेक 4 years फॉर मी, इट माइट बी लिटिल लॉन्गर फॉर सम पीपल एज वेल, बट एक दिन मैं बनूंगा या बनूंगी. कीप दिस एटीट्यूड इन योर हेड इवन आफ्टर सेटबैक्स. आई नो इट्स वेरी इजी टू से अभी बिकॉज मैं बन चुका हूँ, बट आई हैव बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 years ऑफ माई लाइफ. बार बार मेंस में अटक जाना इज अ बिग थिंग.
टायरिंग प्रोसेस है, अनसर्टेनिटी है, इट इज अ टायरिंग प्रोसेस, इट इज अनसर्टन, बट यू हैव टू कीप योरसेल्फ थोड़ा थोड़ा, आई वोंट लाई, आई डोंट हैव एनी शेम इन एडमिटिंग इज, मेरा मेंस क्लियर नहीं होता, थोड़ा दिन रोना थोड़ा मैं भी करता था, क्या हुआ क्यों नहीं किया, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, ये वो, बट देन आई हैड अ रीजन व्हाई आई नीड टू गो देयर. आस्क योरसेल्फ कि व्हाई, and if you know why, probably you might face setbacks. Hope and pray you do not. Probably you might face setbacks, but that why will give you an answer why you need to bounce back. ठीक है, तो दिस इज प्रॉब्ली एवरीथिंग फ्रॉम माई एंड. मोस्टली मैंने ट्राई किया है बेसिक चीज़ें, एडवांस चीज़ें कवर करने का जितना फॉर कवर कर सकता हूँ फॉर समवन हु हैज़ वन ईयर एट हिज और हर हैंड. नाउ आई वुड एक्चुअली वांट यू गाइस टू लाइक आस्क क्वेश्चंस. बहुत टाइम है हमारे पास, जितना क्वेश्चन करना है करो. ये होना चाहिए कि ऐसा ना हो जाए कि अरे यार ये क्वेश्चन पूछना भूल गया मैं. ठीक है, इफ यू वांट यू गाइस हैव टू आस्क व्हाटएवर जो भी पूछना है. हाँ यस मैम बताइए. हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, वेरी गुड. There are a couple of ways. One of the ways of maintaining consistency is planning. You plan your schedule. आपने जैसे मंथली प्लान किया है, उसको वीकली में डिवाइड किया, डेली में डिवाइड किया, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू चेक वेदर यू आर डन और नॉट. तो वो टारगेट्स फुलफिल करने का एक तरीका होता है कि व्हेन यू आर फुलफिलिंग योर टारगेट्स यू विल बी कंसिस्टेंट इनफ कि नहीं यार आज का टारगेट मिस कैसे हो गया, बिकॉज आज का टारगेट मिस होगा तो वो कवर करोगे ना किसी दिन, तो नेक्स्ट डे पे प्रेशर आएगा, तो नेक्स्ट डे पे डबल हो जाता है. This is one way. Second, be motivated enough. Right? Third, एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म बनाओ. लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि लेट्स से वीकली टारगेट हो गया, तो इन दिस वीकली टारगेट का सिस्टम डेली टारगेट्स होते हैं, तो मैं डेली टारगेट कंप्लीट करता था तो मेरे को 10 15 20 50 जो भी होता था रुपए देता था. कोटा में कर देता कि +50. किस दिन कंप्लीट नहीं कर पाया तो ऑल्दो मैं अगले दिन कंप्लीट कर दूंगा एक्स्ट्रा देके, बट देन आई डिड नॉट गिव माई सेल्फ सम कैश दैट डे. और एक बार जब ये 300 400 रुपये हो जाते थे तो जाके कुछ खा पी लेता था, या फिर कोई वीडियो गेम खरीद लेता था. मैं, मुझे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है, ठीक है ना, तो ये कर लेता था. एंड लास्टली गेट सम लेजर या फिर हॉबी, कुछ एक्टिविटी है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो गया, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फुटबॉल देखना बहुत पसंद था, वीडियो गेम्स, तो मेरे डेली टारगेट्स खत्म होते थे. आई यूज्ड टू लाइक वॉच फुटबॉल और प्ले सम वीडियो गेम्स, वैलोरेंट हो गया, थोड़ा सा डोटा हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सब चीज़ें. डू दिस, ठीक है, यही दिस विल हेल्प यू विद कंसिस्टेंसी एज वेल एज योर मोटिवेशन. ठीक है, यस मैम. ओके, okay, yeah, I'll answer this question. So 2018 I gave my first attempt. I was just right out of college. I gave my pre and मुझे क्या होता प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, तो उसी जो ब्रेक होता है उसमें आई जॉइंड अ जॉब एज अ फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री. तब तक प्री भी निकल गया. आई वाज लाइक हाय ये क्या हो गया, एक साथ सब कुछ हो रहा है, देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के. ठीक है, तो प्री निकल गया, आई जॉइंड अ जॉब एज वेल. जॉब के साथ साथ मेंस दिया, नतीजा सामने आप लोग के. थिंग्स डिड नॉट गो वेल एट ऑल. मतलब आई टेल यू माई मार्क्स इज वेल. ऑप्शनल में 250 260 270 इज अ गुड मार्क्स नाउ. उस समय गुड मार्क्स वुड हैव बीन 290. मेरे केमिस्ट्री में 150 आए, 140 आए थे 500 में, विच इज लाइक यूपीएससी इज लाइक कि बेटा जाओ, डू नॉट कम एट दिस एग्जाम अगेन नेक्स्ट ईयर. तो मैंने क्या डिसाइड किया कि यार जॉब के साथ नहीं होगा, जॉब से रिजाइन मारते हैं. सो अबाउट माई जॉब, येस आई क्विट माई जॉब. अबाउट अदर थिंग्स, नो. आई वॉज इन टच विद माई फ्रेंड्स. मैं फेसबुक चलाता था. आई डिड नॉट हैव इंस्टाग्राम. आई जॉइंड इंस्टाग्राम वेरी रिसेंटली रिजल्ट निकालने के बाद. फेसबुक में चलाता था बट पढ़ाई किस में नहीं चलाता था. ठीक है, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू कट योरसेल्फ आउट फ्रॉम द वर्ल्ड. दोस्तों से नहीं मिलो, दोस्तों से बात कर सकते हो, मिल सकते हो, बट ट्राई करो कि वो फोमो जो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो उतना ज़्यादा आप में ना हो. ठीक है, तो दोस्तों से मिलो, बात करो, लिव अ नॉर्मल लाइफ, ट्रीट इट जस्ट एज एन एग्जाम, बट मेक श्योर वेन एवर यू आर स्टडिंग, जब भी आप पढ़ रहे हैं, किताब के साथ हैं, इट्स यू एंड योर बुक्स और योर नोट्स, नथिंग एल्स. ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन राइट. एनी मोर क्वेश्चन गाइस? हाँ यस सर. हाउ टू डील विद करंट अफेयर्स? ओके, करंट अफेयर्स इज द एलिफेंट इन द रूम, बिकॉज लिटरली सबको जानना है करंट अफेयर्स क्या करना है. यूपीएससी कहीं से भी करंट अफेयर्स पूछ दे. ऐसी आइडियली जब आप ब्यूरोक्रेट बनोगे, ये सब करोगे, यू विल हैव टू रीड अ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर रीडिंग इज समथिंग दैट विल कम टू यू.
So what I would suggest, newspaper पढ़ो. Now, some people might ask newspaper से notes बनाए नहीं बनाए. It's your decision. I was someone who was not a notes maker. So if you are comfortable making notes online, offline, जैसे भी, make some notes out of it. Make sure you do not spend too much time on newspapers. Like if you guys are starting, it might take 1.5 hours. Gradually 45 minutes पे आएगा. Be very selective while reading newspapers. हर कुछ नहीं करना है आपको, पढ़ना है. जोकोविच यहाँ पे जीता है, वो कहता है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. बट लेट्स से टेनिस में कोई नया रूल आ गया है, उस रूल के पीछे की ओरिजिन और समथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. एडिटोरियल्स, इश्यूज, ये सब स्कीम्स, पॉलिसीज, डिस्कशंस, ये सब देखो. So for current affairs, one good newspaper, whichever is you're comfortable with. There are two newspapers, Indian Express and The Hindu. इनमें से कोई एक. Supplement it with a good monthly current affairs magazine. ठीक है ना? Because हर कुछ न्यूज़पेपर में कवर होगा तो अब शायद मे बी यू माइट नॉट बी एबल टू रिटेन, और रिवाइज करना होगा, क्या वापस न्यूज़पेपर खोलोगे? नहीं ना. दिस इज वेयर अ गुड करंट अफेयर्स मैगजीन कम्स इनटू प्ले. तो इसका कॉम्बिनेशन करके करो, थिंग्स विल बी गुड फॉर यू. ठीक है, बताइए. समवन वाज आस्क्ड. हाँ, यस, बताइए. आफ्टर हर. ओके, ओके, या. See, we live in a world that is ideologically colored. We might have very different opinions and everything. And I am sure आप लोग समझ गए मैं किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ. But as an administrator, non-partisanship, neutrality is a key virtue. You might have some sort of ideological affiliations. Almost no one is everyone. No one is actually right in the middle. People are either here. But as an administrator, try your best to be in the middle. And when you're writing an answer, think like an administrator. आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, आपका कोई मतलब नहीं रहेगा कौन पार्टी क्या कर रही, कोई क्या कर रहा है, क्या आइडियोलॉजी. आपका मतलब फैक्ट से जमीन में क्या हो रहा है. कुछ हालात बिगड़ते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आइडियोलॉजी, यू हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड. You have to work for the last person standing in the socio-economic line, irrespective of his identity. इसीलिए think like an administrator. Example, ये जो अग्निपथ स्कीम हो रहा है, ये जो बवाल मचा हुआ है, it's very irrational. ठीक है? Maybe some of us might support it, some of us might oppose it, but aren't we united in the fact that public property rail jalana is not a solution? This is where you start thinking as an administrator. It's not special कि कोई course हो जाए, launching a new course, how to think like an administrator. No. Rational thinking रखो. Pros, cons. And generally, be constructive in your approach. Let's say there's something that's very offensive. Write the pros of it, write the cons of it, give a suggestive way or a way forward. What can be done to make it better? Right, this is how you start thinking. Newspapers पढ़ो. हाँ, another good thing that I would want you guys to follow, Sunset TV के बारे में पता है? उसके debates देखा करो, बहुत अच्छे debates होते हैं. And that is something like bureaucrats and eminent personalities is it. वो हल्ला वाला debate नहीं है. ठीक है ना? It's actually very constructive debate, बहुत opinionated debate होगा, अच्छे opinions मिलेंगे, अच्छे pointers मिलेंगे. You might not get all of it. Sunset TV के debates YouTube पे मिल जाएंगे, देख लेना. You might not get all of it right now, but एक thought process उससे develop होगा. So this is something that you can do for thinking like an administrator. I hope I've answered your question, right? Yes, ma'am, बताइए. See, there's no ideal way of identifying what is important or what is not. Like there might be something that might feel important to me, but it might not be very important to you, because like we have different orientations, different ways of solving an answer, different optionals as well. Like for example, BJP and Congress or the Indian party system might be important for me as a political science student, but as a maths optional, it's not at all relevant. Right. So first of all, there are a couple of general things that you can look in a newspaper: issues, policies, schemes, interviews of reputed people, Reserve Bank of India के governor, honorable FM, PM, president, इनके ये सब interviews, important interviews, editorials, IR में discussions, this is important. Stock market crash कर गया, इस stock का value इतना गिर गया, this is not important. Stock market क्यों crash किया है, रुपये क्यों गिर रही है, international flight of capital क्यों हो रहा है international market में, this is important.
यू स्टार्ट रीडिंग योर न्यूज़पेपर, ग्रेजुअली आ जाएगा. वैसे मैंने बताया जैसे क्रिकेट में इंडिया ने इतने रन पे ऑल आउट हो गया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. बट एक नया टेक्नोलॉजी आया है, व्हाट इज द रूट ऑफ द टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी, दैट इज इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली इंडायरेक्टली नहीं आएगा, बट देन देयर कैन बी अ क्वेश्चन लाइक टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट्स, यू कैन कोट दैट एग्जांपल. ठीक है ना. अब जैसे लेट्स से देयर इज सम पॉलिसी, यू कैन कोट इट इन योर GS1. लेट्स से अगर GS1 में होगा तो आप शायद बोल सकते हैं कि सोसाइटी के किसी विंग को या फिर किसी पार्ट को बेनिफिट करने के लिए है. GS2 में you can talk directly about policies, laws, explanations and everything. GS3 में if it has some economic element or an element which is related to GS3 syllabus, you can include that. GS4 में you can link it with some sort of values. ठीक है ना. For example, PM गरीब कल्याण योजना, you can link it with compassion. You can link it with servitude. You can link it with nation building, providing for the welfare of the underprivileged, ऐसे करके. तो इट्स अबाउट आप स्टार्टिंग करो पढ़ना, फर्स्ट डे नहीं होगा, बट ग्रेजुअली आप पढ़ोगे, यू पढ़ते पढ़ते यू कैन एक्चुअली थिंक कि अच्छा सोसाइटी क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे यूज कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन में क्वेश्चन होगा इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, पॉलिटी में इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. ग्रेजुअली दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टॉपर्स की कॉपीज पढ़ो. वो बना लो कि टॉपर्स की कॉपीज पढ़ना है, एंड दिस इज वेयर थिंग्स विल स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस फॉर यू. डू नॉट इवन एक्सपेक्ट कि यू स्टार्टिंग ऑफ कि पहले दिन आपको रियलाइज हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट. इसलिए मैंने क्या बोला, फर्स्ट डे इट माइट टेक यू 1.5 hours to read a paper. Gradually cut it in half. ठीक है. I hope I've answered your question. Yeah. Yes, ma'am. Okay. Okay. For that optional, I did not take full-time classroom coaching. Again, let me clear it out for you. What I did was a crash course. Other than that, I took the freely available notes. I made my own notes out of it because मेरे पास टाइम ही नहीं था. At a time when I switched over from the optional, probably मैम के batches end हो रहे होते हैं. That time I started. So I did not have optional. I found it pretty comprehensive. Okay, okay. Your decision. Like if you feel you can manage it on your own. See, at the end of the day वही है कि हर चीज में आता है कि डिसीजन आपका है. मैंने क्या बोला, सुनो सबका, करो खुद का. If something is working for you, do not change it. If something is not working, तब change करने का सोचो. No, absolutely not. This is a very wrong idea कि इंटरकनेक्टेडनेस करने से के चलते कोचिंग लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो, कोचिंग आप क्यों लेते हो? बिकॉज यू नीड हेल्प ऑन दैट सब्जेक्ट. ऑप्शनल इज एन एरिया वेर आई वुड से कि कोचिंग ले लिया करो इफ यू थिंक, बिकॉज वो थोड़ा टेक्निकल ज्यादा होता है. बट इफ यू आर एबल टू मैनेज ऑन योर ओन, इफ यू आर एबल टू इंटरकनेक्ट, इफ यू आर एबल टू पॉइंट आउट कि जो करंट इंटरनेशनल एरिना में रियलिज्म हो रहा है, दिस वॉज समथिंग चाणक्य टोल्ड अस 2000 बैक. चाणक्य इज इन पेपर 1 सेक्शन A, international issues is in paper 2 section B. Aren't you doing it on your own? So as a please do not fall for these rumors, guys. Stay very much away from rumors. Rumors फैलते हैं, बहुत होते हैं. Stay very much away from it. Do not become a tap. आप लोगों को खुद एक जब आप बन जाओगे, आप लोगों का काम बनेगा अपने ट्विटर पे कि stay away from rumors, stay away from rumors लिखने का. ठीक है ना, भाषण दिलवाने का कि अफवाहों से दूर रहें, अफवाह फैलाने वाले को दंडित किया जाएगा. इसलिए अभी भी stay away from rumors. If you think something is working for you, stick to it. But again, optional is an area. GS में देखो, I did not take coaching as such. थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हो जाता होगा तो that is a different thing. But optional is something that I will actually tell you कि take coaching. In fact, even for GS as well, if you think you need coaching, do not hesitate. Anything that works for you. वैसे ऑप्शनल में, if you think you're doing अपने कर सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है. If you think you need help, बिल्कुल go for it. वो भी बहुत अच्छी बात है. Do not let someone else decide for this examination what you want to do. This is important. ठीक है, सुनो सबका, मेक अ स्ट्रेटजी, करो खुद का. ठीक है. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. यस सर. या ओके. Okay, what mistakes are overcome and at what point of time I knew I was going right? Okay. ठीक है, thank you.
Okay, so a couple of things that which was pointed out to me, and a couple of things I figured it out myself. For example, I was always told that my content is good. So I had figured it out. मेरे पास content है. I had to work on my presentation, and this was pointed out to me. At times, I used to refer to toppers copies. मुझे लगता था कि यार मैं तो ऐसे ही लिखता. इस टॉपर ने इतने अच्छे से लिखा है, एक डायग्राम बना दिया. ये डायग्राम मैंने क्यों नहीं सोचा? This is what I felt was working for me. PSIR, I couldn't even complete my paper. Like my third attempt, I wrote with PSIR. First two was with chemistry, third and fourth was with PSIR. I scored 199. Justifiably, because मेरा paper 2 literally कुछ किया ही नहीं था. This was what I realized that no, I have made a mistake here. I need to work on it. So the first step of solving a problem is recognizing there is one. If you think there is a problem, recognize, work on it. And when you start seeing positive changes, incremental changes, if you go to bed thinking that you have done something better than what you did going to bed the other day, this is where you see growth. ठीक है ना? And daily visible होता है, थोड़ा थोड़ा करके daily visible होगा. I hope I've answered your question, right? Which stage is? Okay, so I wouldn't answer my question this way, but I'll answer my question, your question in a very different way. Prelims, I believe that mains is predictable as well as controllable. You can predict what might be there. You can control it to a very fair extent through your answers. नहीं भी पता है कुछ ना कुछ आप लिख के आ ही जाओगे. This is the truth. 3 घंटे में 20. If in 3 hours you have to write 20 questions, you will write something or the other पक्का से. Interview is something which is unpredictable but controllable. You might like they asked me a question on road accidents. I don't even know how to ride a bike. मतलब मेरा road accidents का हुआ ही नहीं है. Thankfully, या फिर I do not have any relation with road accidents. They asked me all of a sudden. This is unpredictable, but I answered them well. I give them proper reasons. This is controllable. So your interview is unpredictable but controllable. Prelims is unpredictable and uncontrollable. You cannot predict what they'll ask. You cannot control the options as well. Okay, so this is something कि आप अपने end तक you can like solve a couple of questions, prepare yourself the best, and so hope that things fall very well for you. So technically, prelims I felt was the toughest stage. It will be probably for everyone because it's like an eliminator. It's like it'll be thrashing the cream from the crop. Like सब अच्छे बच्चों को बहुत अच्छे बच्चों का प्री भी क्लियर नहीं होता है. I know very good people. I know very good people. I know couple of selected officers. अर्ली 200 के अंदर रैंक है, बहुत अच्छे, उनको भी इस पर प्री क्लियर नहीं हुआ. आई वोंट टेक एनी नेम्स और समथिंग. दिस इज अबाउट प्री. बहुत लोग का प्री ही क्लियर हो रहा था. मेरे को देखो बार बार प्री क्लियर हो जा रहा था. आई टेल यू अ स्टोरी अबाउट माय फ्रेंड अभिनव. मेरे बिट्स पिलानी का दोस्त था वो. if someone asked me कि who would have become a better officer like traits किस में जाते हैं? OLQ was officer like qualities. Abhinav has better OLQ. I have no shame in admitting this. This was pre ka cutoff. This is in, this is out. I always used to be 1 or 2 questions inside. He always used to be 1 or 2 questions outside. So this exam does not test your caliber or your potential. There's a lot of luck factor involved. अपने एंड से हम लोग को क्या करना है? वी कैन, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? वी कैन नॉट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स. अपने एंड से हम लोग को प्रिपेयर तैयारी अच्छे से करनी. वील कवर ऑल कॉर्नर्स. वील ट्राई आवर डू आवर बेस्ट. इफ समथिंग अनप्रेडिक्टेबल कम्स अप, पहले वी विल ट्राई टू सॉल्विंग यूजिंग द नॉर्मल मेथड. नहीं हुआ तो कुछ गेसिंग वेसिंग टाइप का गेम होगा, उसके बाद देखा जाएगा. दिस इज द थिंग अबाउट प्री. So that's why I feel prelims is the toughest or the weirdest phase of this examination. Any question? Thank you. Yeah. See, there are many people who would recommend different things. I am someone who would recommend कि at least एक हद तक syllabus करो, उसके बाद start answer writing. Why? I'll tell you why. Let's say the syllabus is from A to Z. You have reached A to J, and A to J is a domain where the core questions of the core part of the questions of the subject is being asked from. You are like, चलो core part हो गया, let us start answer writing. You might be able to write answers, but since you do not have idea of what happens after J to Z, you probably won't be able to integrate that part. And integrating different parts in an answer is very key. कोई static question है उसमें कुछ current affairs का integrate कर दो, कुछ current affairs वाला उसमें static integrate कर दो,
And there are always questions which have a combination of static and current affairs. उसमें बस सीधा जाना है आपको. So this is why I'm someone who would recommend you guys first complete a substantial portion of your syllabus. उसके बाद jump into answer writing. There are other toppers, there are other people who have other views. You might have another view. It's absolutely all right if you're on a different page. ठीक है? Thank you. बोलिए मैम. Yeah. Okay, what made it me clear that? Again, when I say prelims is uncontrollable, मतलब the questions that are there, उसके responses are fixed. We cannot actually control that, but preparation is very much controllable. So what I did, focused on the basic stuffs, basic books and all. Again, one very important thing that I always do and I always recommend, do not follow more than 2 sources for a single subject. Other than your optional. Your optional might require you to follow more than that. It's absolutely all right. So what I mostly used to do was, यही दो, जैसे मान लो लेट्स से फॉर मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटीज प्लस स्पेक्ट्रम एक बुक हो गई, या फिर इफ यू गाइस आर इन कोचिंग देन योर कोचिंग नोट्स प्लस स्पेक्ट्रम और कोचिंग नोट्स प्लस एनसीईआरटी, ऐसे करके, राइट. इफ यू आर लाइक लेट्स से प्रिपेयरिंग फॉर पॉलिटी, लक्ष्मीकांत प्लस योर कोचिंग नोट्स, या ओनली लक्ष्मीकांत वुड आल्सो डू, ऐसे करके. डू नॉट फॉलो मोर देन 2 बुक्स. तो वही है, बेसिक बुक्स उनको पढ़ो, रिवाइज करो, एक दो बार और रिवाइज कर लो, करंट अफेयर्स भी देखते रहो साइड बाई साइड. And then when time comes, give a lot of mocks. And just ऐसा नहीं है कि mocks दो and then भूल जाओ. Mocks दो, tally your answer, read the solutions. The questions you have made a mistake on, circle them, put a special emphasis on them, and एक हफ्ता बाद वापस आओ. वापस solve the questions without seeing the answer. 80% of the time you'll be able to solve it correctly. यही करो. Use your mocks as a study material in itself. Mocks बहुत सारे दिया करो. This is what has been helping me every time. Knowledge plus adequate practice. Exam hall mein, there is always like you'll have to use some sort of intelligent guessing option elimination. So that is for some other day. उस पर अभी नहीं सोचना है, वो उसका टाइम बाद में आएगा. बट यही है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल, कि ऐसा हो सकता है, इट इज वेरी कॉमन कि अराउंड 60 क्वेश्चंस यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. सो यू माइट हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू हैव लर्नड, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्लाई करना है टू एलिमिनेट ऑप्शंस. इंटेलिजेंट गेसिंग, आई एम नॉट टेलिंग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, नहीं वो नहीं है. इट्स इंटेलिजेंट गेसिंग, स्मार्टली गेस करना है, फिर एलिमिनेट ऑप्शंस, एंड देन जब टाइम आ जाए चूज वन व्हिच यू थिंक इज द बेस्ट सूटेड. दिस इज व्हाट वर्क्ड फॉर मी फॉर प्रीलिम्स. ठीक है, ओके ओके ओके. व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड द डोमिनो इफेक्ट. एक दिन लाइक इट्स लाइक थिंग्स आर गोइंग गुड, एक दिन खराब हुआ एंड लाइक इट विल रुइन एवरीथिंग. टक 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 टक. यू नो हाउ टू स्टॉप अ डोमिनो इफेक्ट? हाथ लगा के. बट इफ अ डोमिनो इज फॉलिंग, you put your hand there, it will stop, it won't hit the next domino. हाथ कैसे लगाना है? It's your initiative, you have to tell yourself कि नहीं. Sometimes जो पहला ही गिर रहा होता है हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, dominoes को, so it does not push over the other dominoes. So let's say you have missed your first day, tell yourself okay होता है, first day मैंने miss कर लिया. Next day, मान लो let's say you have 6 chapters to cover of Lakshmikant and you have 3 days left in a week and you have 6 chapter every day. For the other 3 days, you'll have to do 8 chapters. 2 divide it. ऐसा मत करो कि उसी दिन पूरा और 6 chapter कर लेंगे. Don't do this. Incremental changes, guys. Incremental changes. This is what I've been talking about. Small changes over time will yield results. And breaks बीच में ले लिया करो. I'm someone who used to take breaks. In fact, a lot of breaks. Don't even do that as well. मतलब बोलते हैं ना कि excess of too much is like wrong, but breaks ले लिया करो. Let's say once a week टाइप का अपने थोड़ा इवनिंग चले गए दोस्तों के साथ, कुछ पार्टी वार्टी कर ली, वीडियो गेम्स खेल लिया, तो एब्सोल्युटली ऑलराइट, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है. प्लान योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली, टेक इनिशिएटिव, अंदर से आवाज आनी चाहिए. ठीक है, ओके. सो आई नेवर स्टडीड मोर देन 8 hours a day. रेयरली अपने जीवन में कभी एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया होगा बहुत मोटिवेटेड होके. शायद किसी दोस्त का कोई एग्जाम निकल गया होगा, उससे तो मोटिवेट हो गया, चलो 10 घंटे पढ़ लेते हैं. अदरवाइज आई वाज समवन यूज्ड टू गिव 8 hours. कभी कभी
मोस्ट ऑफ द टाइम 6 hours. तो मेरा वही था कि 6 hours, बट दो 6 hours वुड बी डेडिकेटेड 6 hours. मतलब वो 6 hours के बाद उठ के बाद आदमी थक जाता था. इस टाइप के 6 hours होते थे. If 6 hours, if I know that I'll be taking 1 hour per Lakshmikant, so probably I'll put 6 or 7 chapters a day. 7 why? To push myself a little bit. Otherwise 6 or 7. वैसे ही know your capacity. कई बार for beginners it is advised कि pages गिनो. Pages गिन के करो. 20 pages or 25 pages a day. अगर आपको लग रहा है फर्स्ट डे 20-25 पेज हो रहा है, नेक्स्ट डे 30 करो. अगर आपको लग रहा है 20-25 डे आधा में हो जाए तो 40-45 करो नेक्स्ट डे. So this is one way in which you guys can do. ठीक है? Any more questions? Yes, ma'am. नहीं, you are taking a coaching and you are doing it the first year. So why are you like, क्यों एक साल वो कर रहे हो? If you think by the end of your graduation you are prepared enough, go give this exam. Like, why are you pushing it 1 year? See, again, it's your call. But then if you are like, we बोल रहे हैं ना कि you do the static part, ये सब अभी वाला optional ready कर लो before your third year, by the end of your third year. तो जो period रहेगा उसमें like you have to do work on current affairs and थोड़ा बहुत incremental changes होते हैं. Either this, or if you are comfortable, if you actually want to push about it, talk to your faculties. Because I was someone जो सीधा ऐसा था कि चलो मैं अपने फोर्थ ईयर में ही स्टार्ट किया था, फोर्थ ईयर के एंड के आसपास, एंड 6-7 महीना में जो मैंने कवर किया था वो कवर किया, एंड देन आई स्टार्टेड right out of college I gave my first pre. This is what I did. Again, it's up to you. ठीक है, talk to your faculties and everything. That is a little down the line. तब तक आपका खुद level of maturity and level of preparedness आ जाएगा. To a very fair extent, you will get to know. Are you ready enough or not? Just ready enough, not ready. Ready enough. ठीक है. I hope I have answered your question. Awesome. Okay, I never planned my day ऐसे. My day planning was based on my monthly schedule. उसको narrow करके weekly and उसको narrow करके daily. मेरा ऐसा कभी नहीं होता था कि 9 से 12 पॉलिटी, 12 से 12:30 बताया एग्जाम बताया, सब 12:30 से 12 लंच. Depends again. It very much depends on the phase of your preparation and the nearness of your exam. Let's say between my prelims and mains इस साल का, I knew that GS में content था. I had to like focus on beautification of my answers or value addition. So I used to give more, but my optional wasn't that ready. So मेरे को I used to give around 60-65% of my day to my optional. But यही जब पहले था, I was like कि चलो optional तो कर लेंगे बाद में, उस वाला phase में था, तब I used to give let's say 30-35%. Ideally your essay plus your optional is equal to your GS के 4 papers ideally. But again, this does not hold. It depends on the context. Let's say जो आपका unprepared है, जिस हाथ पे चोट लगी उसमें हाथ को थोड़ा extra दोगे ना आप लोग, वही logic लगाना है आपको. If you think your hand is hurting, you have to work on your hand that a little more, and accordingly divide your time. But again, it varies from person to person, and optional to optional again. ठीक है? Okay, I have a Telegram channel. If I'm allowed to share it, it's like you can go on Telegram and you can search Shubham Shukla IAS karke. So I have been uploading my notes there. Optional I haven't started yet, but first of all, it's very illegible, but I'll still upload it. Second, I have uploaded notes of some micro notes of some toppers on the channel, so you आप वहाँ से download कर लो. ठीक है? So any more questions? I'll take him, then I'll take yours. Yes, sir. Okay, so first of all, people get average marking in GS because they write average answers. So I'll answer your question in 2 parts. हमें आंसर्स में थोड़ा बेटर देन एवरेज बनाना है. कैसे? GS Tech 2 का क्वेश्चन हो गया तो आर्टिकल्स, कमिटी के नेम्स, कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो गया, ठीक है ना. फिर कुछ IR में कुछ इंडिया का मैप टाइप का बनाना है. GS3 में लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट फूड प्रोसेसिंग, तो फूड प्रोसेसिंग वाला क्लासिकल डायग्राम होता है, मेगा फूड पार्क्स, फर्स्ट लेवल क्लस्टर्स, थर्ड लेवल क्लस्टर्स, कोई डायग्राम टाइप का बनाना है. इंटरनल सिक्योरिटी में अगेन ड्राइंग अ मैप. GS1 में रिसोर्स लोकेशन में ड्राइंग अ मैप, गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स, ये सब करना होता है, राइट. GS of and again interrelating
between other papers. Like if there's a question on on society, you can definitely put in some sort of articles from paper GS paper 2. If there's some question on, let's say, education पे, you can always talk about article 21 talking about 21A ये सब type की चीजें. Interrelate करो, underline करो. This is something that will make your answer better than your optional. See, I give a very classic example. When you start preparing 1 year down the line, आपके सबके पास, imagine yourself as civil engineers. All of you will have sufficient stuff, materials, knowledge to erect a building. उस बिल्डिंग का दाम सबके लिए 20 लाख होगा, किसी के लिए 18 लाख, किसी के लिए 20 लाख, 22 लाख, बट वो 20 लाख के रेंज में होगा. दिस इज योर एवरेज स्कोर. उस बिल्डिंग को अगर आपको 50 लाख में बेचनी है, ब्यूटिफिकेशन करो, ग्लासेस लगाओ, कुछ इनोवेशन करो, एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट टाइप कर लो, साइड से स्पायरलिंग स्टेयर्स दे दो, एक्स्ट्रा पार्किंग दे दो. दिस इज समथिंग दैट इज ब्यूटिफिकेशन. जो मैं बता रहा हूँ ना, ब्यूटिफाइंग योर आंसर्स. तो ऑन माई टेलीग्राम चैनल आई हैव अपलोडेड सम ऑफ माई टेस्ट कॉपीज. देख लो, मेरे कॉपी से भी देखो, बाकी टॉपर्स कॉपी से भी देखो कि हाउ आई हैव ब्यूटिफाइड माई आंसर्स, हाउ आई हैव यूज्ड डायग्राम्स, रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट्स. इट विल हेल्प यू लॉट. टाइम बचाएगा, स्पेस ज़्यादा लेगा, एंड जो पेपर बंदा चेक करेगा वो उसको थोड़ा यूनिक भी लगेगा. सबको अगर लिखा है लंबा 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 लिखे जा रहा है कि इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड 271 मिलियन पीपल, ब्रॉट 271 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2005 एंड 16 करके एक लंबा सा इतना सा लिखा, लिखने में टाइम तो लगेगा ही. आप क्या करो, ग्राफ बनाओ, एक बड़ा सा एक छोटा सा, और ड्रॉप दिखा दो कि 271 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, या पॉवर्टी वहाँ एक एक्स एक्सिस पे टाइम, और ड्रॉप दिखा दो 271 मिलियन का, और उसको पूरे डब्बे में कर दो. जगह भी ज़्यादा लेगा, टाइम भी कम लेगा, इट इज़ अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. तो इसका खेल है. एंड रहा बात हाउ टू मैनेज जीएस विद ऑप्शनल, अगेन जो मैंने बोला, टाइम को आपको करना पड़ेगा, हाउ मच प्रिपेयर्ड आप हो, आपका ऑप्शनल कितना बड़ा कितना छोटा है. दीज आर मल्टीपल फैक्टर्स. आइडियली डिवोट योर टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन जीएस एंड ऑप्शनल. डू नॉट इग्नोर द ईदर. मतलब एक ऐसा नहीं कि बोलते ना कि एक को बचाने जाओ तो फिर बोलते हैं ना कि दूसरा डूब जाए, वैसा भी नहीं होना चाहिए. वही वो हिंदी में कहावत है, एक को मनाती हूँ दूसरा रूठ जाता है. ये भी नहीं होना चाहिए. गिव एडिक्वेट टाइम टू बोथ. इधर यू कैन डू दिस, और व्हाट यू कैन डू इज 3 days a week फॉर जीएस, 3 days a week फॉर ऑप्शनल एंड ऐसे, 7th डे पे रिविजन एंड चिल करो. एंड जब टाइम आएगा तो यू विल सी दैट व्हेन इट्स अराउंड योर प्री, तब तो आप ऑप्शनल यूज कर नहीं रहे होगे. तब लेट्स से इट्स अराउंड 4 day फॉर जीएस, 1.5 and rest 3 days for revision and mocks. ऐसे करके आप टाइम दोगे. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, राइट? ऑसम. एनी मोर क्वेश्चंस? यस मैम. Okay, I'm not sure if I'm allowed to take names, but there are a lot of them in market. Vision वाले अच्छे हैं, शिशुन्यास वाले अच्छे हैं. It depends upon whichever you're comfortable with. जाओ यहाँ मार्केट में ओल्ड राजेंद्र नगर में किलो किलो के में मिलेगा. बोलो ये करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन दे दो, आपको बोलेंगे दुकान ले लो हमारी. ठीक है ना? पॉइंट बीइंग कि देयर आर लॉट ऑफ अवेलेबल इन मार्केट. टॉक टू टॉपर्स, टॉक टू पीपल, रीड कपल ऑफ देम योरसेल्फ, जो उसमें कंफर्टेबल लगे, गो फॉर इट. ठीक है? यस मैम. ठीक है. ओके. Ma'am, do you want an honest answer, or do you want an answer which will be like कि ये सर ने सब कुछ पढ़ा हुआ है? Honestly, I did not read even a single book for PSIR. I did not have the time. Time wasn't a luxury that I could afford, because मैंने बीच में साइकिल में चेंज किया था ऑप्शनल, एंड देन प्री 2-3 महीना 4 महीना दूर था, एंड मेंस लकीली कोविड pushed it a little, but then मतलब I gave my third attempts without even completing my optional. So I did not have the luxury of referring to any books. Books refer करो, it's very good. Do not overdo it, because मैम के notes is very much self-sufficient, and I followed them. मैंने इसे खरीद लिया 1000-1200 जितने में भी आते हैं. I made my own notes of it. जहाँ नहीं पढ़ा, I used Google. There are a couple of good Telegram channels for almost every optional. I was fortunate enough to be in one channel जहाँ पे लोग discuss करते थे voice chat के through. So these are the things that you guys can do. ठीक है? Okay, being unique is interrelating. Ma'am dictates a lot, जो भी होता होगा, या whichever optional में. Let's say sir PubAt पढ़ाते. Sir is one of the finest teachers of PubAt in this town currently.
and many top rankers are like symbolize that. सर पढ़ाएंगे वही चीज़, कई बार सर बोलेंगे ये वैलिडेशन कर लो, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ से ला सकते हो, कुछ इंटररिलेट कर लो, interrelate your answers with the current examples. Now everyone will have the same concepts to write. It's about how you present it and how you both sprinkle the extra data, facts, or whatever the extra analysis that you do. In fact, for dynamic sections of a paper, for example, Pol Science, idea of India, China, India, Russia, India, Israel is the same, but how you analyze is very important. Like some person might talk about कि China जो रशिया कर रहा है यूक्रेन में, China will become very strong by it. China is motivated. But someone who has read a lot more वो बोलेगा no, this puts China on a back foot because the world is united and they're monitoring China very well. And this is what analysis brings to you. Probably notes might be same, but then it's your initiative. What extra can you put in? This is for almost every optional, even for some technical optionals. जैसे मुझे याद है केमिस्ट्री में बोला गया था ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन प्रूव करने को, n lambda is equal to 2d sin theta. I proved it. Someone might have given a real life example of how this works ऐसे करके proof के end में. So don't you think that person deserves an extra half or 1 mark? आपका initiative है, ठीक है? Someone was asking, yes sir. The interviews, right? Okay, let me open. I have my transcript somewhere. Okay, so first of all, UPSC interviews are a very pleasant experience. सर ने बता दिया था कि यहाँ पे जो मॉक फॉक में आपके ऊपर चढ़ा जाएगा, it won't be like that. The people are probably the most learned people. At the same time, they know you as in कि जितनी मेरी उम्र है, I'm 27. उससे ज़्यादा उन लोगों ने पब्लिक सर्विस में लाइफ दी है अपनी. They have 30-35 years in public service. So you cannot actually technically fool them. So being honest is probably the best policy. Honesty is the best policy. वो कोट पढ़ा ही होगा. Being honest, the panel is very calm. They want to hear from you. Again, वही है कि do not drag it a lot. आपसे पूछे what is your name? So my name is Shubham Shukla. Done. Or you can say, sir, I have been named Shubham Shukla. You know, sir, my father was walking and then he thought, hi, कुछ lucky हो जाता, and then he named me Shubham. And this is why I cherish this name and I'm proud of. ऐसे नहीं करना है. So it's a very genuine and a cordial session, cordial atmosphere. People are very learned. They'll be very polite. In fact, मैं इस टोन में बात कर रहा हूँ. मैं एग्जाम इंटरव्यू रूम में बहुत आराम से बात करता हूँ. Yes sir, I think this is a solution that can be put forward. And then because वो सामने वाला आपके साथ इतना polite तरीके से बात कर रहा है. And sorry. Yeah, try being precise and then be very calm, be very polite. And with respect to questions, I was asked on almost everything that was around, like in my detailed application form. I was a part of NSS, so I was asked about NSS, and then I was asked about prohibition. Prohibition means sharab bandi. I don't know why. I have no idea. And I was asked about coaching industry because I was a faculty at one of those coaching institutes for JEE and NEET. And then I was asked about road accidents again. I don't know why. I had presented a research paper in my college days. I'm an engineer. My research paper सब डाला था. एक thesis थी मेरे पास. So they asked me a couple of questions on that. And I was asked this one question from political science. They said, like, there's this scholar Hannah Arendt. उनका एक quote है, man is a political animal. Ma'am, the panelists asked me, now उन्होंने ये बोला कि शुभम, for 2 minutes you will be speaking on why man is not a political animal. ये इस पे speak करना था. It was a monologue. Then there's another panelist who asked me to give a monologue on circular economy. Then she talked to me about disaster management, gave me a situational question कि अगर तुम ऐसे district में जाते हो जहाँ disasters बहुत होते हैं, what would be your approach? Then I was asked questions on my optional as well. International relations में I got asked questions on Ukraine, Russia. I got asked questions on the failure of United Nations. I got asked questions on the ICJ verdict on Philippines, वो 9- line वाला. And then I was asked other questions as ki manufacturing. I am a manufacturing engineering by graduation and engineer by graduation. So I was also asked on Six Sigma, ये सब करके. Do you think it works? So I tried being honest. I answered almost everything. जहाँ नहीं पता था, I politely requested for permission to guess. And I answered very calmly, simple language में. Shashi Tharoor-esque language नहीं करना है.
ठीक है, simple language, simple English, they are very calm, polite people, and this is probably why I think interviews clicked for me. Okay. Yes ma'am. Okay. See, about biasness of opinions, again, it's something that you cannot control, right? So we should, while answering, try to be as rational, as objective, know the environment that you're talking to about, right? You cannot be, if you're trying to be an administrator, you cannot be outright critical, ये गलत है, वो गलत है, ये बर्बाद हो रहा है. You have to answer that way. And if they disagree, they might question you a little, or they might move forward. They are very, very learned people. I'm not saying that biasness का role नहीं है. There might be some sort of role of biasness. This is about human conscience, right? But then again, it is something that you cannot control. What you can control is what comes out of your mouth. इसलिए think before you speak, right? यही एक इसी तरीके से control करना होता है. You cannot control everything. What you can control is things at your end. So work on that. You will work on that. When time comes, there'll be a lot of mock interviews, sessions with many people like sir. They'll tell you how to approach, what to say, what not to say. You'll be interview trained. Do not worry. Time आएगा तो वो भी होता है. ठीक है? See, it depends very much. Like, if you are writing specifically something in your DAF about electrical engineering, then you need to have some sort of knowledge. Other than that, some basic ideas about electrical engineering or some applications of the electrical engineering in current day, or some thing about the power sector or something like that, hybrid vehicles, e-vehicles, or rechargeable batteries, battery systems. These are things that you have to prepare, which you will prepare in your due course of preparation. Other than that, there's always an option. You can say that, sir, it has been quite some time since I've graduated and I do not have these concepts on my fingertips. So I would actually not like to answer this question. You can always be polite. They'll understand कि भाई चलो यार 3-4 साल हो गए हैं, जो भी साल हो गए हैं. That's, you can always say no, sorry sir, I do not know, because it's about being honest. Right? Any more questions? या फिर अब session बंद किया जाए? Yes sir. Yeah. Thank you. हाँ. Okay. Okay. Okay, so some points that I would like to tell my younger self, given that I time travel to the past and tell him कि ये नहीं करना है, ये करना है. Number 1, optional. गलत optional choose कर रहे हो. Choose the right optional. Number 2, answer writing करते रहो. Inertia है, beat that inertia. Number 3, revision पे focus रखना है. Probably in my couple of my starting attempts, I wasn't that strong in revision, but gradually revision आ ही गया था because I had started attempting this exam too many times. Number 4, topper copies. I started reading topper copies very late, very late. This was probably something that I should have done some time back. I did it finally in my 4th attempt, but I should have done it a couple of years attempts back. It probably in my first attempt itself. Toppers की copies पढ़ना. And number 5, be patient. This is what I would like to tell my younger self. कितना वो सुनेगा, it's a matter of debate, because it will like चल जा. Any more questions, guys? Come on. Yes, ma'am. Okay. Okay. True. Maximum 2 sources. Again, geography is a subject which is boring because many of us are not able to relate it on a very micro level. And बहुत बार हमें गलत book भी बोल देता है, recommend किया जाता है. For example, many people have recommended GC Leong to me. And GC Leong is probably the most boring book that you could use for that subject. So देखो, maximum 2 sources per book. It could be a video lecture, audio notes, or some books, permutation and combination of this. Other than that, जहाँ भी stuck हो रहे, there are a lot of UPSC videos. In fact,
another very good thing about UPSC prep is you can go and, like, let's say you don't know what is stagflation, तो जाओ stagflation space UPSC, तो UPSC relevant आपको बता देगा, कोई ना कोई articles, कोई coaching institute, कोई articles. If you can do this in YouTube as well, कोई ना कोई video मिल जाएगी. Let's say Indian Ocean Dipole आपको समझ में नहीं आ रहा है, go to YouTube, proper infographic video के साथ देख लो, ऐसे करके कर सकते हो आप. But if you are finding a source very boring and you have some alternatives as well, do check out the alternatives. क्या पता थोड़ा better मिल जाए. ठीक है? Okay. Okay. So see, try करो जितना एक, like let's say you have like NCRTs are a very good source always. So NCRT से you start करो. So let's say you're stuck at NCRTs. So you can go to Google and refer to them. Again, see, the FOMO for too many resources always exists. मुझे भी होता था अपने इंटरव्यू रिजल्ट निकल के 2 दिन पहले, यार ये बुक पढ़ लेता तो इसमें ये क्वेश्चन आता. It will always be there. What you can do is resist it. एक दो सोर्सेज से फॉलो करो, कुछ नोट्स है उस पर देखो, कुछ वीडियोस हैं. फॉर जोग्राफी यूट्यूब में देयर इज दिस रजतनिल सोलंकी मैम, उन्होंने जोग्राफी पढ़ाया हुआ है, उनके वीडियोस देख सकते हो. आई रेफर टू हर वीडियोस एज वेल बिकॉज मुझे भी जोग्राफी बहुत बोरिंग लगता था. रजतनिल सोलंकी, ठीक है. सो इट्स अबाउट हाउ यू आर एबल टू जेल योर प्रिपरेशन वेल. डू नॉट रश फॉर टू मेनी सोर्सेज. एक बार आपको लगेगा कि यू माइट बी टेम्पटेड टू गो, बट डू नॉट. नहीं हो रहा है, यूट्यूब है, फ्री इन्फोग्राफिक्स है, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं. कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रहा है, सब्जेक्ट पे दिक्कत हो रहा है, टॉपिक पे हो रहा है, तो यू कैन अगेन रेफर टू समथिंग और द अदर. ठीक है. वन सेक, बताइए बताइए. इकोनॉमी, नितिन सिंघानिया. नितिन सिंघानिया सर ने इकोनॉमी लिखा है. आर्ट एंड कल्चर हुआ ना जी. निकालिए. ओके, आई एम ऑफिशियली टुडे इयर्स ओल्ड दैट आई रियलाइज दैट कि नितिन सिंघानिया सर की इकोनॉमिक्स की बुक है, बट मैंने कभी नहीं सुना इसकी बुक के बारे में. बट ओके, इट माइट बी अ गुड बुक, आई डो नॉट नो अबाउट इट, सो आई वुडंट से एनीथिंग अबाउट दिस बुक, बट इट डिपेंड्स ऑन यू. if you are actually if you are actually see, about that, if you are actually someone who is comfortable with economics अपने notes वोट से, then you can jump to any other standard book. For example, Munil sir के notes हो गए, या फिर श्रीराम का book is something that my roommates did and all. I did something very different. I will not be talking about it because आपको divert कर देगा. But economy, Shriram IAS की book is also Shriram sir की जो book है economy वाली, that is a good book. Otherwise, you can rely on your coaching notes and then these जो 2-3 sources मैंने अभी आपको बताए. ठीक है. Why not? This is for some other day. I prepared for some other exam, वहाँ से मेरा economics clear हो गया था. इसलिए मतलब, but I mentioned 2 or 3 good sources, right? वो आप देख सकते हो. It's up to you how you are pushing your subject. It's very much up to you how you are going for it. But at the end of the day, cover होना चाहिए. That's the key. नहीं हो रहा है, कुछ special topic समझ में नहीं आ रहा है, go to YouTube, go to Google. Investopedia is another good source for economics के doubt clear करने के लिए. Investopedia, Wikipedia होता है ना, वैसे Investopedia. This is another good source. ठीक है. Any more questions? Sir, आप बता रहे थे. Okay. Yeah, 1 year you should be through. Like let's say you guys will be appearing on 28th May 2023. So at least May to April, May 22 to April 23. इतना मिनिमम करके जाओ. और अदरवाइज देयर इज नो एंड टू डूइंग करंट अफेयर्स. 5 साल पहले करंट अफेयर्स कैसे होगा, बट इतना तो अच्छे से करके ही जाओ. ठीक है. एनी मोर क्वेश्चंस? यस सर. इंटरव्यू बहुत फ्रेंडली होता है. दैट विल बी प्रॉब्ली द इजीएस्ट एंड द मोस्ट फ्रेंडली इंटरव्यू ऑफ योर लाइफ, अनलेस आपने कुछ बहुत मेजर गलती ना कर दी हो. बहुत अच्छा एनवायरमेंट, लाइक यू विल एक्चुअली एंजॉय. यू आपको समझ नहीं आएगा कि टाइम कैसे पास हुआ. इंटरव्यू बहुत जो आपको यूट्यूब पे दिखते हैं ना, इट्स लाइक इट्स दोज आर द हार्ड लेवल इंटरव्यू. वो उसका बॉस लेवल बहुत हार्ड आता है. असली वाला इंटरव्यूज वो लोग आपको अलग लेवल से माइंड मैप से जज कर रहे हो कर रहे. सो रियल इंटरव्यूज इज वेरी चिल. इट्स वेरी फन. इट्स अ फन प्रोसेस. इन फैक्ट द एंटायर इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोसेस इज वेरी फन. सूट पहन के साड़ी पहन के चले जाओ इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू दे के आ जाओ. इट्स वेरी फन. ट्रस्ट मी, इंटरव्यूज आर वेरी फन. इट्स नॉट दैट स्ट्रेसफुल. जो स्ट्रेस लेना तो किसी भी चीज में स्ट्रेस ले सकते हो. No, 1823 people of in my batch, or 26 people were called. 1820s.
685 रिजल्ट अभी आया है, एंड जो और 50 60 70 80 लोग का वेटिंग लिस्ट में आएगा. तो इट्स अबाउट 1 in 2.5 गेट सिलेक्टेड आर टाइम. पहले 1 in 3 होता था. ठीक है. तो डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, एनी स्टेज फॉर ग्रांटेड. कहीं से भी किसी का कट सकता है, बट दिस इज लाइफ. अगेन दिस इज लाइफ. बोले यूपीएससी इज अ ग्रेट लेवलर. इट्स लाइक रिप्रेजेंट्स लाइफ एट अ वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल. आप कहीं से भी अलग अलग डिब्बा से आए हो. छोटे कॉलेज का बंदा हीरो बन सकता है, आईआईटी का बंदा भी हीरो बन सकता है. हो सकता है छोटे कॉलेज का बंदा गायब हो जाए, आईआईटी का भी बंदा गायब हो जाए. यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन. इट these are uncontrollables. Control what you can do. Yes sir. Compulsory to take coaching? No. 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 But then it again, if you think you need it, go for it. I personally did not need GS के coachings because मेरी थोड़ी रीडिंग ठीक थी. मुझे स्कूल डेज में भी सोशल साइंसेस अच्छे लगते थे पढ़ने. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़. ज्योग्राफी नहीं, नॉट एग्जैक्टली ज्योग्राफी, बट हिस्ट्री तो अच्छा लगता ही था. पॉलिटिक्स के बारे में इंटरेस्ट था, ये सब चीज़ों में. इंजीनियर हूँ बिकॉज सब इंजीनियर है इस देश में. बट जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, I did not go for coaching because I think I could have done well in GS. Probably, if I go to my past, I could have also said my the younger self की जा पॉल साइंस की कोचिंग ले ले. Probably, I did not need it because अब मैनेज हो गया है. बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. However, if you feel जरा सा भी नीड है, ऐसा ना हो एक साल बाद की शिट यार ले लेना चाहिए था. रिग्रेट हो रहा है. रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेज में. ठीक है. यस मैम. Okay, so first of all, linking current affairs with वो. So either current affairs can form the introduction or and the conclusion of your answers, or it can form the body of your answers. Depends on the type of question. ठीक है ना. तो it will come to you with practice. यही idea होता है. Giving examples from current affairs, you integrate it with different subjects इधर उधर से. This is how you link current affairs with your answers. And what is the other question? Different dimensions. Yeah. See, different dimensions जब आप आंसर लिखने लोगे, let's say पॉवर्टी पे आ गया, तो पॉवर्टी के अलग डायमेंशन से इकोनॉमिक हो गए, सोशल हो गया, और लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटिव कोई डायमेंशन हो गया. इट माइट कॉज सिविल अनरेस्ट, जॉबलेसनेस, इट माइट रिड्यूस द नेशनल पीस. इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड. हर क्वेश्चन में यू डू नॉट हैव टू टारगेट एवरी डायमेंशन, बट द बेस्ट सोर्स ऑफ योर डायमेंशन इज योर जीएस का सिलेबस. जीएस वन में क्या क्या है? हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब है. जीएस टू में क्या है? पॉलिसी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, लॉज. GS3 में 10-12 टॉपिक्स हैं. These are your various dimensions on which this will help you very much in essay dimensions, right? And कुछ अलग खोजना नहीं. There is this pastel approach, political, economical, scientific, technical. और इतना कर बोलते कीवर्ड्स याद नहीं करना है तो सिंपल अपना जीएस का सिलेबस याद कर लो. सिलेबस याद नहीं होना चाहिए एवरीवन. हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद हाउ माई इंटरव्यू वेंट. नहीं, आई वॉज वेरी मच प्लीज विद हाउ माई इंटरव्यू वेंट. लाइक आई वॉज लाइक कि चलो अच्छा इंटरव्यू हो गया है. यूपीएससी भवन में था. यूपीएससी भवन के जस्ट गेट नंबर 3 के बाहर पाव भाजी और लस्सी वाला मिलता था. तो मेरा प्रायोरिटी था जाके पाव भाजी लस्सी खाना. आई वॉज वेरी हैप्पी. मतलब अगर मेरे को 180 में भी मिलता आई वुड हैव बीन चलो अच्छा मिला है. लाइक आई डू नॉट हैव, आई एम समवन हु इज लाइक वेरी मच कंटेंट. कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है. आई वाज लाइक अच्छा इंटरव्यू हुआ है, एक भी सब कुछ आंसर किए, पोलाइट थे. आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड. आई डिड नॉट हैव एनी ये कर सकते थे. आई नेवर हैड दैट. एनी मोर क्वेश्चन गाइस? क्या बस से क्या मतलब बोलते हैं कि अब इसको समाप्त किया जाए. तो थैंक यू सो वेरी मच. इट वाज ओके, बिल्कुल ओके. बिफोर आई टेक द थैंक यू बैक. बहुत अच्छा लग रहा है यार, दिल से खुशी होती है भाई. वो मीम है ना, दिल से बुरा लगता है भाई. तो इट्स लाइक दिल से खुशी होती है भाई. सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई एम वेरी मच रिलीव्ड. I mean, happiness is there, but probably it's relief that's more. Philosophical sense, you can also say that relief is also a form of happiness. But यही है कि खुश हैं, you do not have to enter this cycle again. You'll finally get to do something that you aspired for. You have finally get to do something that you give your 5 best years of your life for.
तो एक खुशी है. देन पेरेंट्स आर गेटिंग, पापा मम्मी को इज्जत मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है अपने काम से. इट्स अनदर वेरी गुड फीलिंग. सो it's I'm very pleased, very बहुत खुश हुए. I'm getting to interact with a lot of people. लोग रास्ते में बोलते हैं, अरे सर आप वही हो ना? I was like, हाँ भाई वही हूँ. तो वो भी एक अलग किक है. ऑल्दो चाउमीन खाते खाते बीच में कोई बोलता है, भाई बुरा लगता है, भाई खाने दो यार प्लीज. बट ठीक है, चलो, इट्स समवन इज कमिंग टू यू, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग योर पेरेंट्स. इट्स लाइक योर एफर्ट्स आर गेटिंग रिवॉर्डेड. ऐसा फील होता है. आई होप आप जल्दी आप लोग को भी ये फीलिंग मिले. ये फीलिंग हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं. दिस इज द थिंग. सो एनी मोर क्वेश्चंस? कुछ पूछना है किसी को? हाँ सर बताइए. It depends on you, to be very honest. मैं बोला ना, यूपीएससी इज अ ग्रेट लेवलर. इफ यू आर गेटिंग इनटू गुड कॉलेज, गो फॉर इट. मान लो लेट्स से अगर आपको स्टीफेंस मिल रहा है, तो आप XYZ कॉलेज क्यों जाओगे? स्टीफेंस चले जाओ. स्टीफेंस से इतने सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं. बट अगर आप XYZ कॉलेज आपको मिला है, करो अच्छे से, ग्रेजुएट अच्छे से करो, पैरेलल यहाँ प्रिपेयर करो. Your dedication, your college background to an extent does, it might create an impression. But if you're coming from a good college and you're talking not worthy of it, it'll fall back against you. But if you're coming from a mediocre college and you're someone where the board finds you are have a potential, you'll be rewarded more handsomely. ठीक है ना? So dedicated रखे, prepare करो, you'll do well. Any more questions, guys? पक्का? So again, giving you guys back, thank you. So thank you so very much for being so patient and for all your questions. And welcome. And to the people watching online live right now, I couldn't take your questions because मेरे पास कोई resource नहीं है take करने का. Otherwise, I would have loved answering your questions as well. But it's really very fruitful and happening and pleasuring that I get to interact with aspirants like you. And I hope you guys learn from my mistakes and keep learning from your own mistakes as well. Be dedicated. 16 घंटा, 18 घंटा, 22 घंटा, 25 घंटा नहीं मारना है. 6 dedicated hours is very good. You guys have 11 months on your hand. It's a good enough time period. And always keep asking yourself why. This is very important. Have faith on yourself. Another very important thing. It might be time, बोलते हैं ना कि कभी लगेगा कि यार सब खत्म है, बर्बाद है. नहीं. It's not about the hardest punch that you can hit. I remember reading this somewhere. It's not about the strongest punch you can throw. It's about rising up when you get hit by that strongest punch. So I hope you guys do not get hit by the strongest punch, literally or figuratively. Okay, but I hope that you guys get clear it and become good administrators. Okay, thank you. So thank you so much.